Hello students, I am Dr. Ashish Kumar Suri. Welcome to revision summary part 9 of unit 5 of management. In this session, we will discuss some numericals on international finance. From this topic, repeatedly questions are coming in the previous examinations. You can expect one numerical from this topic. Expected mark will be 1 and the difficulty level is tough. So we will discuss some of the formulas and we will also see some numericals based on these formulas. So first is forward price calculation. When the underlying asset in the forward contract does not pay any dividend, so in case of absence of dividend, the forward price can be calculated using the following formula. So the forward price is spot price, that is S multiplied by e to the power R multiplied by T. Here S is the spot price, underlying assets current spot price. E is the mathematical constant whose value is 2.7183. Now R is the risk free rate, okay, that applies to the life of the forward contract, and T is delivery date in years. Now remember, T is delivery date in years. So in case if the time period is given in month, say 3 months, so first we will convert it into years by dividing this by 12. So in case time period is given in month, we will convert it into years by dividing by 12. In case time period is given in number of days, say for example 19, we will divide it into number of years by dividing it by 365. So we will convert the number of days into years by dividing it by 365. So remember, T is time period in days. Now if there are carrying cost or the storage cost, if there are carrying cost or the holding cost or the storage cost, then the formula will be F equals to S multiplied by e to the power R plus Q multiplied by T. Here Q is the carrying cost in terms of percentage. So if carrying cost is given in terms of percentage, this will be the formula. In case carrying cost is given in terms of amount, so F equals to S multiplied by e to the power RT plus storage cost or the carrying cost. So if storage cost or carrying cost is given in terms of amount, okay, then it will be then we will apply this formula. And if carrying cost is given in terms of percentage, so we will add it to the risk free rate, so it will be R plus Q multiplied by T. Okay. If the underlying asset pays dividend, so in case of presence of dividend, so if the underlying assets pays dividend over the life of the contract, the formula will be F equals to S minus D multiplied by e to the power RT. So we will subtract the dividend from the spot price and then multiply this difference with e to the power RT. So this is a numerical from June 19 examination. What is the 1 month forward price? 1 month time period is given in terms of months. 1 month forward price of crude oil trading at $70 a barrel, trading at $70 a barrel. That means ये हमें spot price given है. When annual interest rate is 6% and monthly storage cost amounts to $60. Okay, तो हमसे 1 month का forward price पूछा है और 1 month का ही हमें storage cost given है, so that is fine. Okay, लेकिन हमें interest rate annual given है, annual interest rate is 6%. So which formula we will apply here? F equals to S e to the power RT plus storage cost, because यहाँ पर हमें storage cost percentage में नहीं but amount में given है. Okay, so here R is 6% per annum, so 6% means 0.06, and because it is given per annum, so we will convert it for monthly, so we will multiply it by 1 by 12. Okay, so the forward price will be, spot price is $70, 70 multiplied by e to the power 0.06 multiplied by 1 by 12 plus 0.60. Okay, so if you will calculate this value, it will be $70.35.
and then plus 0.60. So the net answer will be forward price will be $70.95. So option third here is the right answer. So here we have used this formula because storage cost is given to us in terms of amounts and not in terms of percentage. Then we have purchasing power parity theorem. We have already discussed this theorem in the previous section. So according to law of one price, the price for any good should be equal across markets. This we have discussed in purchasing power parity theorem in the previous session. The price for any combination or basket of goods should be equalized. Now mathematical equation which represents the PPP theorem, okay, is forward price divided by spot price equals to 1 plus inflation rate in home country. Home country is the country about which we are talking, okay, and 1 plus divided by 1 plus inflation rate in foreign country. So this formula is very important. Forward rate divided by spot rate equals to 1 plus inflation rate in home country divided by 1 plus inflation rate in foreign country. From here we can calculate if spot price is given to us, we can cross multiply it here. So forward rate will be equals to spot rate multiplied by 1 plus inflation rate in home country divided by 1 plus inflation rate in foreign country. Okay. Then interest rate parity, this we have already also discussed in the previous section. According to interest rate parity theory is used to analyze the relationship between the spot rate and the corresponding forward or future rate of currencies. Now the mathematical equation will be forward rate divided by spot rate equals to 1 plus inflation rate in home country divided by 1 plus inflation rate in foreign country. From here also, if spot rate is given to us, we can cross multiply it here, and forward rate will be spot rate multiplied by 1 plus interest rate in home country divided by 1 plus inflation rate in a foreign country. Okay. Now look, from this formula and from this formula, okay, formula this, let it be formula number 1, okay, let it be formula number 2. So from formula 1 and 2, forward rate divided by spot rate is common, okay, both the side in both the formula. Okay, so from formula 1 and 2 we can say that 1 plus inflation rate in home country divided by 1 plus inflation rate in foreign country. Okay, so I have taken inflation in home country as IH and inflation in foreign country as IF. So this we can equate it to 1 plus interest rate in home country. So we can equate it to 1 plus interest rate in home country divided by 1 plus interest rate in foreign country. So we can also use this formula based on both these formulas. Okay. Now this is a numerical from the previous examination, September 2020. Given the interest rate on 1 year loan is 14.5%, हमें interest rate given है 1 year loan पर 14.5% and inflation is expected to be 6.5% in India. Okay, India में inflation given है 6.5% and ये India में ही interest rate given है. What should be the interest rate on 1 year maturity loan in Thailand when the expected inflation rate is 8.5%. Now हमें थाईलैंड में इंटरेस्ट रेट मालूम करना है 1 year मैच्योरिटी लोन पर और थाईलैंड का हमें इन्फ्लेशन रेट गिवन है. सो बिकॉज थाईलैंड का हमें इंटरेस्ट रेट मालूम करना है तो थाईलैंड यहां पर हो गया होम कंट्री. ओके, सो वी हैव जस्ट सीन द फॉर्मूला. ओके, लुक एट दिस फॉर्मूला. 1 plus inflation rate in home country divided by 1 plus inflation rate in foreign country equals to 1 plus interest rate in home country divided by 1 plus interest rate in foreign country. So we can use this formula here. Okay, हमें क्या information given है? हमें इंडिया में इंडिया के लिए हमें इन्फ्लेशन गिवन है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है लोन पर. ओके, सो हमें इंटरेस्ट गिवन है. नाउ इंडिया हेयर इज द फॉरेन कंट्री, तो हमें इंटरेस्ट गिवन है 14.5%, दैट मीन्स 0.145 एंड हमें इंडिया के लिए इन्फ्लेशन गिवन है.
So how much? 6.5%. So 6.5% means 0.065. नाउ हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है फॉरेन कंट्री के लिए. ओके, सो इंटरेस्ट रेट ऑन, सॉरी दिस इज फॉर होम, दिस इज फॉर फॉरेन कंट्री. हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है होम कंट्री के लिए. ओके, हियर थाईलैंड इज द होम कंट्री, सो दिस वी हैव टू कैलकुलेट. एंड हमें क्या गिवन है? इन्फ्लेशन गिवन है हमें थाईलैंड में 8.5%. ओके, 8.5%. So it will be 0.085. Okay, so we can use the formula 1 plus inflation rate in home country. 1, okay, this is home country. Okay, 1 plus inflation in home country divided by 1 plus inflation in foreign country equals to 1 plus interest rate in home country divided by 1 plus interest rate in foreign country. Okay, so हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट रेट इन होम कंट्री, राइट. बाकी वैल्यूज हमें गिवन है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन होम कंट्री, तो 1 प्लस 0.085 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में यानी कि इंडिया, 1 प्लस 0.065 इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन होम कंट्री, दैट मीन्स थाईलैंड, ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री दैट इज इंडिया, तो 1 प्लस 0.145. ओके, तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगा 1 प्लस IH डिवाइडेड बाय 1.145 इक्वल्स टू 1.085 डिवाइडेड बाय 1.065. तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1.45 को, तो इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं. 1 प्लस IH का वैल्यू हमें मिलेगा 1.145 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 1.085 डिवाइडेड बाय 1.065. तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1 प्लस IH का वैल्यू मिलेगा 1.1665. ओके, नाउ इस 1 को हम यहां जाके माइनस कर देंगे, तो IH का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.1665. 0.1665 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.65%. Okay, so that means option third is the right answer. That means the interest rate on a 1 year maturity loan in Thailand will be 16.65%. So this way we can calculate this value and using this formula. Now US Canada 1 year forward rate is 1.2380. हमें एक्सचेंज रेट गिवन है USA एंड कैनेडियन डॉलर में, तो इट इज 1.2380. ये हमें क्या गिवन है? फॉरवर्ड रेट गिवन है. ओके, ऑल्सो द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 4% फॉर USA. ओके, USA के लिए हमें रिस्क फ्री रेट गिवन है 4%. 4% का मतलब 0.04. ओके, एंड कनाडा के लिए हमें गिवन है हाउ मच? 3%. 3% फॉर कनाडा, सो 3% मीन्स 0.03. द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज, अब हमें क्या मालूम करना है? स्पॉट एक्सचेंज रेट. तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इक्वल्स टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन होम कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री. नाउ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर होम कंट्री कौन सा है और फॉरेन कंट्री कौन सा है? सो हम ये मालूम करेंगे एक्सचेंज रेट से. लुक, हमें क्या गिवन है? एक्सचेंज रेट USA डॉलर इज इक्वल्स टू 1.2380 कैनेडियन डॉलर. ये एक्सचेंज रेट हमें गिवन है. दैट मीन्स 1 USA डॉलर इज इक्वल्स टू 1.2380 कैनेडियन डॉलर.
नाउ हमने प्रीवियस सेशंस में एक्सचेंज रेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किस टाइप का एक्सचेंज रेट हमें गिवन है, ये डायरेक्ट कोट हमें गिवन है। ओके, और डायरेक्ट कोट में क्या होता है, ये जो करेंसी है ये कौन सी करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी, एंड ये दिस करेंसी इज व्हाट, डोमेस्टिक और होम करेंसी। सो व्हेन वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक और होम करेंसी, इट इज डायरेक्ट कोट। सो दैट मीन्स यूएसए यहाँ पे क्या हो गया, यूएसए हियर इज अ फॉरेन कंट्री हो गया, एंड कनाडा क्या हो गया, होम कंट्री हो गया, राइट। तो हमें फॉरवर्ड रेट गिवन है 1.2380, स्पॉट रेट हमें कैलकुलेट करना है। सो इट विल बी 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन होम कंट्री, होम कंट्री में इंटरेस्ट रेट गिवन है 0.03%, दैट मीन्स 0.03 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री 1.04। तो यहां से हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्पॉट रेट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 1.04 डिवाइडेड बाय 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.2380। तो यहां से हम स्पॉट रेट अगर कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट $1.2500। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द right answer here. Okay, so we have used this formula here, forward rate upon divided by spot rate equals to 1 plus interest rate in home country divided by 1 plus interest rate in foreign country. Okay, so this way students you can practice more such questions on these numericals. If you are preparing for IIT JAM, CSIR NET or NT UGC NET, you can buy study material from Edunkal. This will definitely help you to clear your examination. You can also download the app of Edunkal from your Google Play Store. On this app, you will find a support of more than 250 trained faculties who will help you to solve your queries and to clear your examinations. Thank you very much.